सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बैरफुट कॉलेज कहता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसकी कम से कम बेसिक नॉलेज आपको कि फ्यूज चेंज करना है या इसकी वायरिंग या बैटरी चेक करना है वो आप सीखें। बाहर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के बैरफुट कॉलेज का कोई प्रोडक्ट आपको यस हाँ बाहर के बहुत सारे लोग आप बैरफुट कॉलेज बहुत हमारी वेबसाइट है उस पर देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो हमारी क्लास भी चलती है। क्लास में सारा सोलर का बाहर से महिलाएं घूम लाइटिंग कितना ही और उनके बेसिक पाउडर होता है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। रद्दी अखबार होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में उसको बना लेते हैं। हाँ पेपर उसमें फिर मेथी पाउडर मिला के और फिर जैसे एक पैकेट में करीब 5 पैकेट बनाते हैं उसमें 100 ग्राम तेल। एक बार गिर भी जाएगा तो टूटेगा नहीं। ले जाना चाहते हैं ये आपके पतला करने में काम आ सकती है, आपके शो पीस में काम आ सकते हैं, जो भी जहाँ काम ले सकते हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये मेरी जैसी कंपनी की महिलाएं थी क्योंकि उसको रुचकान मिला। गांव में औरत को पहले बेटे को पढ़ाते थे, औरत को बाहर नहीं निकलने देते। जरूरत किसको पड़ती औरत को? औरत घूंघट निकाल के बैठ जाती, फिर उस काम पे जाता नहीं जाता, वो दारू पी रहा है, मारे बेचारा, वो कैसे जिंदगी काटता है। तो क्यों ना औरत सब कुछ काम कर सकती है। तो एक सोच था हमारे सामने, एक चुनौती थी। हेड पंप लगाई थी हमारे संस्थान में। तो वहाँ पे हेड पंप ठीक करने के लिए गई तो लोग हंसे कि ये गागरा पलटन के आप हेड पंप ठीक करेंगे। लेकिन जब वो ठीक करके पानी उन्हीं हंसने वाले को पिला के आई ना तो तालियों से स्वागत किया। कब सब
ये बढ़िया। कहाँ पर है आप? तिलोनिया। तिलोनिया कैसे लगा तिलोनिया? बहुत बढ़िया। क्या सबको नमस्कार। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं सबको नमस्कार। ये हो ना कुछ बात? तो मेरे बारे में जानते हैं आप लोग? क्या बात है, मैं तिलोनिया का खास आदमी हूं, मुझे नहीं जानेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा नाम है जी जोखिम चाचा। क्या नाम है? गांव में तमाम बच्चे बुजुर्ग माता बहने सब मुझे प्यार से चाचा जी कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ओहो, इधर से आवाज नहीं आएगी, कोने से? और इधर से भी? अच्छा, एक साथ बोलेंगे जोर से, चाचा जी। जुग जुग जियो मेरे भतीजे भतीजियों। तो इस जागृति रैली यात्रा में जो भी आए वो सब मेरे भतीजे भतीजी हुए। तो भाई आप में से कोई जरा मेरी उम्र का अंदाजा लगाएंगे, कितनी उम्र होगी मेरी? अरे क्या बात है, कोई ऐसी बता रहा है, क्या बता रहा है? आपकी काउंटिंग इतनी कमजोर क्यों है? अरे क्या, अरे सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट। क्या बात करते हो? कोई ऐसी बता रहा है, कोई 100 साल का तो मेरा पोता ही है। तो मैं खुद बता दूं क्या मेरी उम्र? चलिए आप मेरा चेहरा देखते रहिए। मेरी उम्र होती है तकरीबन 365 साल होती है। यकीन होता है? बिल्कुल सही बात है। दरअसल में मैं उम्र में यकीन नहीं करता हूँ, मैं तजुर्बे में यकीन करता हूँ। और ये पूरा आप देख रहे हैं SWRC बैरफुट कॉलेज, ये सब गांव के लोगों का तजुर्बे का एक उदाहरण है। यहाँ पर लोग गांव से आते हैं और ये यहाँ काम अलग अलग जो चल रहे 12-13 तरीके के काम चल रहे हैं। वो पीने के पानी से काम शुरू हुआ और फिर स्वास्थ्य का काम आया, फिर शिक्षा के लिए काम हुआ, फिर दस्तकारों के साथ काम हुआ और फिर सोलर तकनीकी को पूरी दुनिया भर में फैलाया गया है यहाँ से। तो गांव के जितने भी लोग हैं उन्होंने यहाँ काम को आगे करके सीखा है और काम को आगे बढ़ाया है। तो ये सब एक तजुर्बे की बात है। और यूं तो साल में 365 दिन होते हैं। देखिए, तो 365 दिन का मतलब है कि हम रोजाना सीखें और सीख को आगे बढ़ाएं। तो लोगों से हमें सीखना चाहिए और जहां से हमें सीख मिली हो उसको आगे तक ले जाना चाहिए। तो आप सभी पूरे देश भर से और दुनिया भर से जो लोग इधर आए हैं वो यहाँ की जो सीख है गांव की उसको आप देखें और उसको आगे तक ले जाएं। तो ये मेरा खास काम हुआ। पर भाई देखिए, आप जानते हैं उसको बैरफुट कॉलेज क्यों कहते हैं? अभी मैं किसी से मिलकर उधर बात कर रहा था तो लोगों को लगा कि बैरफुट कॉलेज का मतलब यहाँ चप्पल उतार देंगे, पर ऐसी बात नहीं है। एक बैरफुट एक प्रतीक है गांव के वंचित लोगों का। जो गांव के गरीब से गरीब लोग होते हैं, किसी कारण से वंचित हो गए, स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ लिख नहीं पाए, गरीबी की वजह से उनको मौके नहीं मिले, उनकी जीवन शैली ऐसी थी कि उनको जानने के अवसर कम मिले, उन लोगों का ये कॉलेज है। और कॉलेज इसलिए कि यहाँ पर अडल्ट लोग सीखते हैं तो गांव के लिए वो काम करते हैं, इसलिए इसको बैरफुट कॉलेज कहते हैं। और बैरफुट कॉलेज में कोई पेपर क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं, कोई कास्ट बैरियर नहीं, कोई रिलीजन बैरियर नहीं और कोई जेंडर बैरियर भी नहीं है और न कोई इकोनॉमिकल बैरियर है। जो गांव में काम करना चाहते हैं
जो भी लोग गांव में काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ तिलोनिया आते हैं, यहाँ हमारे साथ 6 महीना 12 महीना साल 2 साल यहाँ रुकते हैं और काम को करके सीखते हैं एक दूसरे से। तो प्रैक्टिकली काम को करके सीखते हैं, उसके बाद चाहे तो बैरफुट टीचर बन जाते हैं, बैरफुट आर्किटेक्ट बन जाते हैं, बैरफुट आर्टिजान्स बन जाते हैं, बैरफुट कम्युनिकेटर बन जाते हैं, बैरफुट डॉक्टर बन जाते हैं। तो तमाम सारे हैं जो 12-13 तरीके के रूरल डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं उसमें से वो क्षमता हासिल कर लेते हैं और ये सारा काम सीख के वो गांव में जाकर अपने गांव के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए इसको बैरफुट कॉलेज कहते हैं। तो आप सभी लोगों का फिर से मेरी ओर से और SWRC बैरफुट कॉलेज परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, इस्तकबाल। Namaste सबको. Hello everyone. How's Jagriti Yatra going? Is it all good? Okay, right now as you have seen so many products of Barefoot College SWRC outside. I hope you have all seen that. Hateli Sansthan is the traditional craft and cloth making industry of Barefoot College. So right now we are going to have a fashion show or a ramp walk in which we display the products of Hateli that are the traditional clothes. For example, the one I'm wearing right now is the Chanteri sari, and all the products that you are seeing today are made by the traditional women of Rajasthan who are from the very backward classes. So if you are going to buy some of our products, it will be really helpful for that women who are working really hard to earn a living. Thank you. जाओ जी, मन गीत कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन शकल दिखाओ जी, हर शरारत सब जानू मैं तोरी, हर चले मन बंगाली मैं कर लगे, मर टुकड़े में जागी धोतरी है, ठंडा में थारी चांदनी पड़ता मन में भाग खुशी झूम 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 में जागी तो
मन में बाधी खुशी झूम 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 बाजा का स्वागत है इस खूबसूरत गांव में जिसका नाम है तिलोनिया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ब्यूटीफुल विलेज ऑफ तिलोनिया। वी आर इन द लास्ट लेग ऑफ दिस यात्रा, जिसके बारे में हमने काफ़ी बात की है कि दिस इज द इंटीग्रेशन फेज वेयर यू आर ऑल्सो थ्रू सो फार। बट दिस स्टॉप विच इज द ऑलमोस्ट द सेकेंड लास्ट डे ऑफ द यात्रा, क्योंकि कल लास्ट डे होगा जब हम साबरमती आश्रम में जाएंगे और वहाँ पे हम लास्ट डे रहेंगे। बट उसके पहले आज हम यहाँ पे हैं एंड दिस प्लेस यू विल सी the genesis or the seeds which were sown almost 50 years back of a grassroots movement. एक धरातल से जो कहते हैं क्रांति की शुरुआत 50 साल पहले यहाँ पे हुई थी। And this whole movement has really impacted lots and lots of people, right? काफी लोगों को प्रभावित किया है। तो that's the beauty of this space. हम लोग इसलिए आज यहाँ पे हैं। और जैसा मैंने अभी हम वहाँ बातचीत कर रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम अरविंद आई केयर गए, हम ग्राम विकास गए, हम काफी अन्य जगहों पे गए, आप सब लोगों ने देखा। And one thing I observed there कि whenever you go there, you actually first try to speak to or meet or interact with the founders or the founding team of those places or those institutions which have been built. Now this place I've always find is very unique because when you come here, you don't actually meet the founders or the founding team first. आप उनसे पहले नहीं मिलते जिन्होंने यहाँ इसके संस्थापक थे, संस्थापना की थी। एक्चुअली आप उन लोगों से मिलते हैं यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो लोकल हैं और जो जिनके पास ओनरशिप है और जो इस पूरे बेयरफुट कॉलेज को चला रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट यूनिक थिंग आई फाइंड कि हाउ डू यू रियली ब्रिंग ओनरशिप इन द कम्युनिटी सो दैट इन अ वे द फाउंडिंग टीम इज ऑब्सोलीट, राइट? तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग एट लीस्ट आई हैव। एंड आप लोगों ने भी सुबह से देखा होगा, आपका जो इंटरेक्शन हुआ है यहाँ की लोकल टीम के साथ, उनसे आपकी काफ़ी बातें हुई हैं, तो आपको भी वो एक नज़रिया दिखा होगा इस विजिट में। सो विद दीज वर्ड्स वी आर नाउ गोइंग टू वेलकम बंकर रॉय एंड अरुणा रॉय, बोथ ऑफ देम आर हियर एंड we are going to start. I would first like to invite Aruna Roy ji to come here. संविधान के साथ हम इस बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। तो अरुणा जी। सबको नमस्कार। Greetings to everybody. We will begin with the pledge to the Indian Constitution. हम ये संविधान के लिए शपथ लेंगे। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खड़े हो जाएं
And please place your right hand over there on your chest so that we pledge properly and seriously to what has made us Indian citizens and given us dignity and strength. पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में मैं बोलूंगी, मेरे साथ साथ मेरे एक वाक्य बाद आप उसको रिपीट करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की ममता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस सभा में आज 6 जनवरी 2023 के एकीकृत इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। इन इंग्लिश। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our meeting today, the 6th of January, 2023, do hereby give ourselves to this Constitution. Jai Hind. Okay, friends, young people, मेरे जवान दोस्तों, आप लोगों के लिए बस मैं 5 मिनट लूंगी। मैं इस संस्था की alumni हूँ। I am an alumni of this organization. I left SWRC in 1983. I joined after having left the Indian Administrative Service, and this has been my college. I learned local politics, Dalit politics, women's politics. I learned to live with people. I learned how to eat with them, bear the hardships with them, which laid the foundations of my later life, where I fought with people for their rights. But this organization has made me understand the socio-economic reality, the political reality of India. मैं इस संस्था के alumni हूँ। यहाँ मेरी ज़मीन के ऊपर क्या लड़ाइयाँ होती हैं, कैसे राजनीति फैलता है, सब कुछ मैं यहाँ सीख के गई। और आज मैं alumni होने के नाते आपके सामने हूँ। बंकर की पत्नी भी हूँ और कुछ 53 साल से हम शादीशुदा हैं। So I'm also Bunker's wife. We met as students in the university in Delhi and we married later. But I've been married 53 years to Bunker, and so has he been to me, I hope. So it's been a long journey, and I've just come to say hello to all of you because I happen to be here today.
If you had come here yesterday, I wouldn't have been here. I happen to be here because I live here. I'm a voter in the Gram Sabha in Tilonia. I participate in all its meetings. I think I am a member of Rajasthan, though I come from Tamil Nadu, born and brought up literally in Delhi. And Banka comes from Bengal. We are Rajasthani citizens today. तो मैं ये कहना चाह रही थी कि 53 साल की शादी में बहुत कुछ हुआ है, मगर मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, मैं तिलोनिया की नागरिक हूँ। तिलोनिया, मैं दिल्ली में पली बड़ी, मैं तमिलनाडु की हूँ, बंकर बंगाल का है, मगर हम अब राजस्थानी बन गए हैं क्योंकि बहुत सालों से यहाँ रहते हुए ग्राम सभा के सदस्य हूँ। मैं यहाँ पे मीटिंगों में जाती हूँ। मैं इस गांव की बुआ हूँ, मासी हूँ, नानी हूँ। मेरे रिश्ते नाते इस गांव में हो गए हैं, तो मैं अपने आप को तिलोनिया के नागरिक समझती हूँ। बंकर भी मेरे वजह से नागरिक के हैसियत से नाना बन गया है, क्योंकि मुझे नानी बुलाते हैं तो बंकर नाना बन गया है। तो आप समझ सकते हैं हमारे रिश्ते नाते कितने महत्वपूर्ण हैं। And in the end, I'll say that as a woman, I cherish these relationships with the people in Tilonia. They have nurtured me, they have taught me, and they still are there for me. एक महिला होने के नाते मेरे ये रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, और हमारे देश में हम लोग किसी को बुआ या किसी को नानी या दादी या माँ या मौसी या कुछ बुलाते नहीं तो रिश्ते नहीं बनते हैं। तो ये रिश्ते भी अभी पक्के हो गए हैं। मैं अब इतना ही कहूँगी, आप कभी सूचना के अधिकार की तो एक अलग चर्चा होगा। थैंक यू। एक नारा लगा दे क्या? एक सूचना का अधिकार का नारा लगाते? ठीक। हम गए थे दिल्ली 1996 में एक कानून बनाने के लिए, तो सुशीला गई थी मेरे साथ, तो हमारे दोनों से जुड़ी हुई थी। सुशीला गई वहां पे, उनको पूछा गया तुम कितने पास हो? उसने कहा 4th क्लास पास। तो उसने कहा तुम्हें क्या सूचना का अधिकार का मालूम होगा? अरे बड़े बड़े लोग नहीं जानते, तुम क्या जानते हो? तो सुशीला ने कहा, और वो जो कहा उसको कहूंगी, पहले हिंदी में नारा लगाएंगे क्योंकि हिंदी में ही बोली। उसने कहा क्यों नहीं जानूंगी, मैं अपने बेटे को दुकान बेचती हूँ 10 रुपए देकर, वापस आता है तो हिसाब लेती हूँ। ये सरकार मेरे नाम से अरबों खरबों रुपए खर्च करता है, सूचना नहीं लूंगी क्या? हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो यही है सूचना का अधिकार। नारा लगाएंगे, मैं कहूंगी हमारा पैसा, आप कहेंगे हमारा हिसाब। हमारा पैसा हमारा पैसा, मुट्ठी बंद करके जोर से उठा के, हमारा पैसा हमारा पैसा। This is a slogan which embodies the spirit of the transparency laws that we brought. Our money, government money is our money. So if government money is our money, the government accounts are ours. So the slogan is, I'll say our money and you'll say our accounts. Our money! Our money! So we want full transparency from the government. We want to know how each pie of the government budget is spent. Thank you. I went to the wrong school and the wrong college in India. You know which school I went to? And do you know that out of all the school and colleges, only one person has come out of this school and college who lives and works in a rural area? What sort of reflection is that on our education system? Tell me. Why is that? Why is it that so many people have come out of these elite institutions and not one has thought of living and working in villages today, in Bharat today? Can anyone tell me, can anyone give me an answer? Anyone? That's a very complicated answer, capitalist economy. Why is that? What's wrong with our youth today? Tell me. उनका मानना है कि देश शहरों में बसता है, गाँव में नहीं। हाँ साहब? उनका मानना है कि देश शहरों में बसता है, गाँव में नहीं बसता। किनका मानना है? जो आप कह रहे हैं ना कि जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं और गाँव में आके काम करना नहीं चाहते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनका मानना है कि शहर ही सब कुछ है, बस गाँव में तो लोग रहते ही नहीं है। ये आपका भी मानना है? सर मेरा क्यों मानना होगा जी?
मैं तो पूरे देश में रहा हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हम तो हर जगह रहे हैं, महाराष्ट्र में, पंजाब, जम्मू, राजस्थान में भी, मतलब सूरतगढ़ में यूनिट थी, तो उस टाइम पे तो छोटे थे, तो हम तो हर जगह रहे हैं। So I have only two. One is follow your heart. Don't listen to your parents. Follow your heart. Do you have the courage to do that? Yes. To follow your heart and not listen to your parents and do exactly what you want to do and what makes you happy. Yeah? Is that a promise you make in front of Ashutosh and Jagriti Yatra? Yes. Secondly, don't give any importance to certificates. Why is certificate so important? Can anyone give me an answer? Can anyone give why certification is so important? To validate for whom? Why? Validation for the society that I have done this. किसने कहा ये? Sir, कौन? हाँ तो हाँ बोलो. validation for the society to show that I have done this thing. Which society are you talking about? The society in which we live. And what about people who live in a village? Are you talking about that society also? Yes, sir. And they don't want certification. If a woman from a village who is illiterate can solar electrify a whole village, why do I need a paper on the wall? Why? Tell me, who are you trying to validate? If in front of you this lady who's 20, 30 years old, solar electrifies your village and it works, why do I need a certificate? That is validation by the acts. But validation by the community is more important than validation by the college, you know? Yeah. So just think about that. Certification does not certify competence. It's a way of hiding behind it. So in Tilonia, certification is not very important for us. The person is more important. The humanity, the compassion, the patience, the tolerance, that's more important, and that you don't get a certificate for. It's either in you or it's not. So please remember these two words of advice. Certification is not important and don't listen to your parents. सर नमस्कार, मैं डॉक्टर जलेंद्र त्रिपाठी उड़ीसा से हूँ। आपने अभी बताया कि सर्टिफिकेट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट टू शो इन द पेपर वॉल और एवरीथिंग. हाउ टू compete in the in examination in service model when we are going to the high service without certificate? We don't have certificate, we can't show the village people how to compete at that. What is the method of that? Good evening, sir. Good evening, ma'am. As sir has told that you have been an IAS before, so I want to ask one question regarding that. That as you have been an IAS and worked for the society as well at that time, so what do you think about the impact you have made right now, as you are making right now? Is like a much more bigger impact, or the one you have done in the service? So what's your comment about that? It all depends whether you want to live in a village. Doctor, are you there? It all depends whether you want to live in a village or live in a city. There are two rules here. एक तो भारत है और एक इंडिया है ना? भारत के छोटा गांव में रहते होंगे आप, पर आप देखिए, if you go to all these villages, very poor villages, you have a person who knows about water, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है. He knows about a medicine, सर्टिफिकेट नहीं है. वो पढ़ाते हैं स्कूल में, सर्टिफिकेट नहीं है. So will you rule them out? Will you, just because they can't get a certificate? They are not looking for government jobs.
इतने लोग हैं जो they want to work in a village and serve the community. They are not looking for certificates, and we should not penalize them. You know, Mark Twain said, never let school interfere with your education. सुना होगा आपने? हाँ? Okay. Why do you want to get into the IAS? Validation. Why do you want to get? Why does the civil service attract so many people? मतलब civil service से IAS में जाना क्यों चाहते हैं? Ma'am, I do not want to get into IAS. I have thought about it, and as sir rightly said, do not follow your heart and don't think about your parents. So my parents were putting me into IAS, but I didn't follow that. And all for youth, I would say they have been, mostly seen the fancy things over IAS, that they have power, they have this and all that fancy stuff. I guess that was most intriguing part of being an IAS. Maybe to think about it. Just about the impact, I was asking that what do you think about the impact a service can make, and living in the village and being directly with the people would be a bigger impact. And what do you also advise to the youth of the people? I'll give just one answer. I mean, there are plenty of answers to give, but anyway. हम सरकार भी इसलिए जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम भला करेंगे. मैंने तो इसलिए गई थी कि मैंने सोचा भला करूंगी किसी के लिए. We went to civil service because we think we'll do something for people. The second thing we do, always think is, कि when we get to government, there'll be scale, huge numbers of people. An organization does work with very few people. हम सोचते हैं सरकार में काम करेंगे तो बहुत लोगों के ऊपर असर होगा. हमें कोई संस्था में काम करेंगे तो चंद लोगों पे असर होगा. मैं भी आंदोलनों के साथ काम करती हूँ और अधिकारों के साथ काम करती हूँ. मैं आपको एक आंकड़े देती हूँ. 40 से 60 लाख लोग हर साल इस्तेमाल करते हैं. 40 to 60 lakh people use the right to information every year, which is between 4 and 6 million people use it. It's the most used RTI in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला RTI हमारा है. I thought to मनरेगा. हम कितने लोगों को काम दे सकते हैं? कितने लोगों को दे सकते हैं? अंदाज बताइए. You work for an employment program. How many can you employ? You run a company, you run an organization. How many can you employ? Any rough figure? None at all. MG NRG at its peak gave 29 crore households work. So I feel work like this you cannot do within the IAS at all. Because you need to struggle with people, you want to live with people, you have to oppose the government, you have to oppose the policy makers sitting in New Delhi, you have to tell them they are wrong, say it's right, it's not possible. The second thing is, in my batch, how did you know my 1968 batch at all? You know me. So then, that's an answer. नमस्कार, मैं रुचिका जैन उदयपुर राजस्थान से हूँ और आप दोनों हम सब के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं सबसे पहले और बहुत बहुत धन्यवाद. आज आपसे लाइव मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा. प्रश्न मेरा ये है कि बदलाव जो है वो सबसे पहले खुद के घर से, खुद के शहर से, खुद के गांव से आती है. क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे जो माता पिता है वो भी शहर में शिफ्ट हो गए. लेकिन अब फिर से जब गांव जाते हैं तो वो भी डेवलप दिखता है. तो मेरा प्रश्न है कि हम सब शहरों से हैं, कहीं ना कहीं कस्बों से हैं, गांवों से हैं. खुद के शहर के बदलाव की शुरुआत किस तरह से की जा सकती है? क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं? क्या एक मैप बन सकता है बदलाव के लिए? बात करते हैं तो पहले तो गांव हो या शहर, हम लोगों के लिए कितना कर पाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि तिलोनिया में जो हम काम कर रहे हैं साथ साथ चलने से हुआ है. और तिलोनिया ने गांव में इसलिए तय किया क्योंकि गांव
एक नज़रअंदाज हो जाता है सारी शहर की सुविधाओं की तुलना करें तो। इसलिए तिलोनिया में ज़्यादातर हमने गाँव को फोकस रखा और गाँव में काम जो जहाँ कुछ है नहीं, जहाँ अभाव है वहाँ उससे जूझने की ताकत भी है। जहाँ जहाँ भी अभाव है वहाँ जूझने की ताकत भी है। जब तक उसको समझना कि उसको थोड़ा हौसला अफजाई करने की, तो फिर बाद में सब जगह ठीक हो जाएगा, फिर वो गांव हो या फिर शहर हो। पर क्योंकि गांव पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो दरकिनार किया हुआ इलाका होता है, तो पहली प्राथमिकता उसे होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर बार ये वाली बात बोलने के लिए कि आपकी जो A4 साइज की डिग्री है वो आपकी काबिलियत कभी तय नहीं करती। मैं 2016 में पहली बार एज अ यात्री आया था और मेरा ये था कि यात्रा करने के बाद मुझे MSW करना है और थिएटर में शायद NSD में जाऊंगा। लेकिन वो जो आपने लाइन बोली थी कि डिग्री इंपॉर्टेंस नहीं मैटर नहीं करती आपकी, तो मैंने अपनी फर्दर स्टडीज परस्यू नहीं किया और उसी की बदौलत ये है कि मैं कभी किसी कॉलेज पढ़ने नहीं गया, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उन्होंने मुझे एज अ जज इनवाइट करा है, क्योंकि मेरी काबिलियत कुछ थिएटर जो मैं सोसाइटी के लिए काम करता हूँ वो मेरे लिए काम आई। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर, इतनी बड़ी जर्नी के अंदर कई बार लगता है कि बहुत सारा काम करना है, लेकिन सिस्टम से कैसे लड़ाई करें। अरुणा मैम से मुझे याद है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मुलाकात हुई थी कठपुतली कॉलोनी वाले डिमोलिशन को लेकर, लेकिन तब भी हम हार मान चुका था मैं, क्योंकि वहाँ 3000 फैमिली को उजाड़ा गया मेरी आंखों के सामने, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए और आज वहाँ बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो गई है। सो इस तरीके से सिस्टम से अगर आप लड़ाई करते हो, अगर इंडिविजुअल, क्योंकि अब तो सिस्टम चेंज हो ही चुका है कि अगर आप आवाज उठाओगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ मुकदमा डालकर आपको अंदर कर दिया जाएगा, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद रखने के लिए वो क्या एक इंस्पिरेशन आए कि हाँ कहीं पर भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाओ। आवाज है तब तक जीवन है, और आवाज अलग अलग तरीके से बोलती है। कभी गा के बोलती है, कभी कविता बोलती है, कभी नारे लगाती है, कभी विरोध करता है, कभी तरीके ढूंढते हैं, कभी प्यार की बातें करते हैं, कभी घृणा की भी बातें करते हैं। तो इस आवाज को खोना नहीं चाहिए। आपके सबके आवाज है, उस आवाज को आप खो दोगे तो आप जिंदगी को गंवा दोगे। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि यह राजनीतिक बात केवल नहीं है। जैसे संविधान का जो प्लेज हमने लिया आपके और मेरी जिंदगी में है, वैसे ही संविधान ने हमें अधिकार दिया अभिव्यक्ति का। आर्टिकल 19 में कहता है कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसको गवा देंगे तो सब कुछ गवा देंगे। एक महाकवि थे तमिलनाडु के, सुब्रमण्य भारती के नाम से। तो उन्होंने एक कविता लिखा है जिसमें उन्होंने कहा, एक महिला कहती है, बहुत बूढ़ी मर रही है, और वो कहती है मैं मर रही हूँ, मुझे तो सबसे ज़रूरत है वो दलिया की जिससे मैं जी जाऊँ, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है मेरी आवाज़ की, कि मैं कहूँ कि मैं मर रही हूँ, नहीं तो मुझे दलिया कौन खिलाएगा। तो इसलिए अपने आवाज़ खोना मेरे लिए तो जिंदगी को खोना बराबर है। तो खो नहीं सकते हैं, आप कैसे भी बोलो, बोलते रहना पड़ेगा। हेलो, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं राजस्थान उदयपुर कोटड़ा तहसील से हूँ, जहाँ पर 95% आदिवासी समुदाय रहता है। हमारे वहाँ पर 2 डैम बनने वाले हैं, उसको लेकर मैंने RTI लगाई थी, और RTI सीधा जो डिपार्टमेंट बना रहा है उसी के ऊपर लगाई, तो उस डिपार्टमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने प्रथम ऊपर लगाई, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने मंत्रालय में लगाई, तो वहाँ से जो RTI है वो धीरे धीरे नीचे आई, और नीचे का डिपार्टमेंट जवाब देने के लिए अब तैयार हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने जब आवेदन किया 30 दिन पूरे हो गए, 30 दिन पूरे होने के बाद प्रथम अपील लगाई, फिर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। जबकि जो ऊपर RTI लगाई वहाँ से जवाब देने के लिए वो राजी हुए, जहाँ पर अब उन्होंने मुझे फीस देने के लिए बोला है कि इतनी फीस लगेगी, लेकिन मैंने जब पहला आवेदन किया तो उसमें कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या करना है? ये संघर्ष है, कानून हमारे साथ है। पहले हम गांव में कुछ पूछते थे तो हमें जेल डाल देते थे कि फलाना है, देश विरोधी है, ये देश इसको विरोध करता है, उसको विरोध करता है।
अब सूचना के अधिकार आपको तो हक देता है ना पूछने के लिए सवाल. So it's right to information is legitimized questioning. So for this questioning itself was a crime. But then after that, आप तो power से प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो the power will not reply immediately and it will try its tricks. So you have to think of it as a struggle with a right. पहले होता था struggle with no rights, अभी struggle with right है. But संघर्ष तो करना पड़ेगा और साथ साथ आंदोलन, संघर्ष, धरना वो सब भी चालू रखना पड़ेगा, तभी वो हमारे लिए फल देगा. मगर राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें जेल नहीं भेजेगा फिलहाल, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए तो कम से कम नहीं भेजेगा, उसके बाद की तो बात अलग है. तो इतना तक मिला है, ये तो लंबी लड़ाई है, संघर्ष करते रहेंगे, जीतेंगे. हम एक नारा लगाते हैं, जीतेंगे, लड़ेंगे, आता है ना नारा, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. ये मन में रख के काम करना पड़ेगा. मैम मैंने प्रथम अपील लगा दी है, तो अभी मुझे के लिए हम अलग से बात कर लें. हाँ, गुड इवनिंग मैम. मैम जैसे फर्स्ट अपील में जाते हैं और जो प्रिलिमिनरी होता है उसमें वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इतना 30 डे उनको और मिल जाएगा. फिर सेकंड अपील के बाद जब वो CIC जाता है तो वहाँ लाखों केसेस पड़े हैं CIC के पास, और उसको नंबर आने में लगभग 2 साल लग सकते हैं, 3 साल 4 साल, पता नहीं किसी को. अगर प्रिजनर्स राइट पे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ डेटा चाहिए, मैं जाता हूँ जुडिशरी के पास, हाई कोर्ट कहता है कि नहीं एग्जीक्यूटिव के पास जाओ, एग्जीक्यूटिव कहता है कि नहीं तुम जुडिशरी के पास जाओ. इसके बाद मैं CIC जाता हूँ तो वहाँ मेरा नंबर 3 साल बाद आता है, तब पूरा डेटा चेंज हो जाता है. तो मैम CIC को क्या एक लिमिटेड टाइम पीरियड देना चाहिए, इसके लिए आपकी क्या राय है? नहीं हुए हैं. अब हमारा कानून डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से थ्रेटन्ड है, आपको पता है. सारा कुछ चला जाएगा, है ना. केवल वो तो पोटला बांध के आप उसको घर के अंदर रख सकते हैं, कमीशन वगैरह सब जा सकते हैं, हमारे जितने भी वेबसाइट्स है वो चले जाएंगे, हमारे जहाँ भी सूचना बाहर आ रहा है सब प्राइवेसी क्लेम करेंगे, कहेंगे कि प्राइवेसी है, कुछ सूचना नहीं मिलने वाला है. तो हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए. हमें फिर से संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क पे उतरना पड़ेगा. RTI जल्दी नहीं मिला, 11 साल लगे थे मिलने में, खून पसीना, सड़क, मतलब वो उस धरना और वो आंदोलन के बगैर कुछ मिलता नहीं है. क्या आप युवा लोग तैयार हो क्या इसके लिए? अब तो मैं 76 साल की हो गई हूँ, क्या आप लोग तैयार हैं? करना पड़ेगा. तैयार है तो सब कुछ बदल सकते हो. आई थिंक द यूथ ऑफ एनी नेशन कैन चेंज एनीथिंग, प्रोवाइडेड you do it with responsibility, with discipline and with focus. You can change anything, but you'll have to do it. Who else will do it for you? Thank you, ma'am. Hello. Yeah. Hello. मेरा नाम इरफान है and I'm an artist. I want to know कि I've been living in this society for 22 years now, and I've been living through the same rules, same regulations, and how, for example, when you said that you shouldn't run after the certificate, so what would be my first step to unlearn the rules that the society has put on me, because it's very hard to unlearn them. And secondly, I also want to know what are your views on the current educational system that prevails in our society. My advice to every young person sitting here is that you get onto a train and go 20-30 kilometers on that train and get off a railway station, which is a very small railway station, and then test yourself whether you have the staying power to stay 1 year without doing anything. You know, we're all used to 100 miles per hour lifestyle. All of a sudden, when you come to a village, it is 0 miles per hour. Nothing moves, nothing works, no one listens to you. And you keep wondering, what am I doing here? I'm wasting my time. That is not true, because they're all looking at you and seeing how you respond. Can you wait for a bus for 2 hours? Do you have a sense of humor?
Can you laugh at yourself? Can you wait and listen what people are saying in tea shops? All this is a part of your learning education. And if you can adjust yourself to a lifestyle and a work style which is very, very slow, then you have earned something. Then at least you know that you have achieved something. That, I think, is very important for any young person. I would definitely recommend that you go and wait for 6 months in a village. Don't go with the proposal, don't go with the funding, don't say I want, just go and live there. Let's see if you can last it out. Very few people have that staying power. And I think that's important for us. If you want to know your country, if you want to know Bharat, you have to do that. You have to be able to do that. The education system today, as I said, is all geared on certification. It is not geared on people who have compassion, who have kindness, who have patience. That is not in the universities. That is within you or not. I think that is so important. So what Barefoot College has done is provided an alternative to education, to your formal educational system. It's an alternative. People have just come here, unlearned. That's a very important process. It takes time, sometimes never. But at least you know that you have it in you or not. So the formal education system, I don't believe will actually produce results. I think it has to be an alternative education system, which Tilonia has managed to show. So come and spend some time here with us. Let's see who asked the question. Yeah, come and spend some time with us. Are you prepared? I spent some time in Swaraj University also. That is a university. This is a college. So you come. You're invited. You're from West Bengal. Aruna ma'am is from Tamil Nadu. How did you end up in Tilonia? And seeing the work that's being done here from the various banners and everywhere, challenges in creating a Tilonia in every village in India and every state in the country. So it's not what you know, but whom you know. Okay? So when I started in 1971, I wanted to come and live and work in a village. I got my first grant from Tata Trust. Why? Because I was from St. Stephen's College. So they thought they can trust me with some money. Then I went to the government of Rajasthan. And the government of Rajasthan said, oh, you're from St. Stephen's College? You won't last long. 1 saal lag jayega, but beyond that you won't have the staying power. I said, "Kyun?" He said, you people are so elitist. Dum nahi hai aap log. So I said, but he said, you take this Tilonia for 1 rupee a month, and I know within 1 year you'll disappear. So I've stayed 50 years, so at least I proved him wrong. Then they said, what is your qualification? I said, I did my master's in English. He said, then what are you doing in a village? You should be teaching. I said, no, I want to live in a village. He said, but you don't have the qualification. That is why I'm so against certification and qualification. Because I started just as an unskilled labor digging wells for 5 years. They said, but you are... I was in my old previous life the national squash champion for 3 years. So they said, oh, why are you living in a village? You should be working in Greenland's Bank or World Bank. And you have... I said, no, I want to live in a village. So I started digging wells for 5 years. And that is where I learned the extraordinary knowledge, skills and wisdom that very poor people have. And I thought I'd start a Barefoot College only for the poor. What the poor thought was important would be reflected in the college. So
So the old man came to me in the village and said, "Are you running from the police?" I said, "No." "You failed in your exam?" I said, "No." "You didn't get a government job?" I said, "No." He said, "What are you doing in this village? Why are you wasting your time here?" These are the perceptions that you have to fight against. This only takes time for people to understand what you're doing here. That is the story of my life. So you're all between 20 and 25. 25 to 28, right? 20 to 27. I started Tilonia when I was 24. So I think most of my people who were in college said, "What are you going to do?" They said, "I'm joining the police, I'm joining the foreign service, I'm joining the bank." They said, "Banka, what are you doing?" I said, "I want to live in a village." They said, "Village? What's wrong with you? Is there something wrong with you?" I said, "No, let me see if I can live and survive and work in a village." So that's how I started. And I think it's been worth it because I've learned so much, I've unlearned so much, and I'm still unlearning. So I would recommend every one of you at least spend a little time in a village on your own without any motivation, without any money, just go and live for 6 months and see whether you have it in you. And if you don't, at least you give it a shot. But don't give up just because someone says, "What are you going to do wasting your time there?" Please, my third advice to you. You on YouTube and other things. The thing that pierces me right now today is you said you have been a Doon school student, St. Stephen's student, and Aruna ma'am is an IS. All these are basically making you great. And out of this, you say we don't like certificates, degrees. It seems to be counter-attacking, but I needed an answer for this. Maybe you're right. Maybe it's a question of privilege. Maybe it's a question. Perhaps ask himself: do we have the courage to act as we think we should, not as we are told we should? So when realization comes, you should act as you think you should. So that is where I have landed myself here, and Banka has landed himself somewhere else. But we have asked that question continuously. कहाँ गलती हुई है? मेरे जन्म में हुआ, मेरे संस्कार में हुआ, मेरे कहाँ हुआ? और मैं आज उसको नहीं चाहती हूँ, तो क्या मैं दूसरी चीज नहीं कर सकती हूँ? और आज बंकर और मेरे पोजीशन सर्टिफिकेशन में थोड़ा फर्क है. मैं उसके पोजीशन से नहीं बात कर रही हूँ, तो उसको तो मैं अलग से बात करना पड़ेगा, वो अपना जवाब देगा. मैं इतना ही कहूँगी कि जब लगता है कि रास्ता गलत है, इंसान दूसरा रास्ता ढूंढता है, और वो ढूंढना वाजिब भी है. करना चाहिए कि नहीं? We'll take one last question, sir. To Madurai and lived in the tribal and rural Madurai for 2 years. So I understand the love with which it was called the Lusuponna or Poramboka. Ma'am would be able to understand the meaning. Lusuponna is a mad girl and Poramboka is a useless wasteland. But I never went hungry ever. If I've gone to a village and they know I'm not well or just been there, they know I love tea. So I've got black tea, goat milk tea, any tea that was there. So felt the love. But at one point, I felt that they were expecting something from me. And you then start feeling that you are the burden to those families or to that village, and then you have to give back. And at that time, all the challenges feel like they're so big: child nutrition, health, agriculture, anything. And you get overwhelmed with those questions and those problems. And then you meet, through Jagriti Yatra, we got to hear Dr. Aravind, we got to meet you. And then you see the profoundness of these simple steps and how you've created
this whole initiative. I just wanted to know how. I mean, it's just that the conundrum or chaos in my head that I'm asking. I don't know if I framed it right, but yeah, that's what I wanted to ask. Thank you. I didn't get your name. My name's Priyanka. Priyanka, how much time do you have? The rest of your life? Then you're going in the right direction. It's always very good to hear that someone has made a decision and for the rest of your life you're going to do exactly what you want to do. But it's also good to know that there are other people like you around who could help you, assist you during your darkest moments, during when you are really feeling down and out. There is someone out there who can assist you. Not your parents, not someone who is in a city, but someone in a village. So you are welcome to come to Tilonia if you want to recharge your batteries. You want to feel that this is a place where you can pick up some ideas, get some confidence, go back. You're welcome to come to Tilonia. All right? About you about 12 years back. I'm meeting you for the first time. So, yeah, the story of Tilonia. The two things you said, don't follow your parents. But in fact, my father listened to me being a farmer dad. So I've been visited about 50 villages in the last 10 years. And I liked one village. I told my dad, let's go to the village. He said, we packed little stuff. And we stayed there for 1 year. And it was life-changing. And in the last 12 years, I didn't use my certificates for any job, fortunately. So those two things happened in my life, fortunately. My question, I work with graduate students. I'm a startup coach. So how can I take this rural and grassroots village information and wisdom to them to make them inspired and solve these problems? Thank you. The first thing I did when I came to Tilonia was to realize that I didn't have all the answers. And I need to depend on people from the village. I need to have my eyes and ears in the village to be able to bring about any change possible. So I actually identified communities and people who came from the backward and scheduled caste and OBC communities. And then we said, this is the way, once you come to Tilonia, you pick up a skill. Don't worry about the time it takes. Don't worry about whether you have it in you or not, but give yourself a chance to pick up a skill. Today, you have people in Tilonia who have tremendous professionalism skills with them, but they don't have that paper qualification. And that for me is very incidental today. So I think it is important that those graduates that you are actually exposing them, they come and see Tilonia or organizations like Tilonia just to ask questions from people how they actually manage to do what they are doing today. It's very important that you take them out of their habitat, out of their environment, because that environment is very stifling. You can't bring about change unless you bring them out of that environment. And I think that is important for them. So please, again, I'm inviting everyone who wants to come to Tilonia just to spend some time and see how this organization ticks. Who are the people behind it and what is so extraordinary about those people? It's not me. I'm not Tilonia. These are the organizations like Ramnivas and people who are Tilonia. They're the ones who are running this. And they have that organizational skill and the confidence to be able to speak to anyone face to face. Okay? That for me is very important. And that is how it went. Please come. It has been 50 years now. If you have to go back and restart it all over again, is there anything you'd like to change or you'd like to do it all the same? No regrets. I'll do exactly the same thing I did. Thank you. Thank you. With these words, we would like to bring closure to this session, and obviously we would like to thank our host, the entire Tilonia team, Barefoot College team, in our own way. And Bankar was asking कि वो famous song जो है वो होने वाला है. So yes, they are going to do that.
तब बदलेगा जब बदलेंगे। कुछ देखा है कुछ देखेंगे, कुछ लिखा है कुछ लिख देंगे। यारो चलो बदलने की रुत है। यारो चलो संवरने की रुत है। यारो चलो बदलने की रुत है। यारो चलो संवरने की रुत है। कह रही तू ठहरना नहीं, गगन गहरा तू बिखरना नहीं। ज़मीन कह रही मुझको छू के तो दे, और आंखें बिना सच से डरना नहीं। यारो चलो बदलने की रुत है। यारो चलो संवरने की रुत है। यारो चलो बदलने की रुत है। यारो चलो संवरने की रुत है। देश को संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग, आप भी गा सकते हैं ये लाइन, आप गा सकते हैं। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। अरे हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक। मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम है। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम है। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी। सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। संविधान के मूल को, संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे। हमारे गरिमा और क्षमता का सपना पूरा करने की, गरिमा और क्षमता का सपना पूरा करने की। क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की। अरे क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की। राजनीति न्याय और रोजगार परखने की। राजनीति न्याय और परखने की। वो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। हम देश हित में,
हम देश हित में बंधुता मत पूत बनाएंगे, हमारे के लोग देश का